Okay, so let's begin with functions. If you recall, we were doing this worksheet previously in our lesson yesterday. We completed question number one, all of it, with all of the answers. We completed question number four, all of it, with all of the answers. इस part में you guys notice that we took the square root on both sides. So slowly we are going towards the recap of MYP4. याद करो जब quadratic equation शुरू हुई थी, the first concept that we learnt was taking a square root on both sides. And the same was done over here. We completed question number 5 completely, where over here specifically we had to find two answers, and we had to take the square root on both sides as well. So I'll start with question number 5D over here, then I'll move to the table questions because table questions भी exam में आए हुए हैं. So let's start with this. Now I'm short of time, so I cannot really allow you guys the time to solve it. So I'm just gonna start solving it. Okay. You guys need to be with me on this and note down the question and also note down your version of the answer or my version of the answer, whatever suits you best. So इस सवाल का मतलब ये है, wherever you see this guy in your question, all you need to do is replace it with a -5. And that is exactly what I'm gonna do. Okay. So let me just first of all copy this because we have a record. We need to have a record of it. So this is it. So I am going to paste this over here. This is my question, my first question over here, and let's try to solve it. So when I solve it, I'm just gonna go to draw and change it to a good pen. So this is a good one, right? So all I was saying was, if you see this guy in your question, which is over here, all you need to do is replace it with a -5 because of the equal sign. So my question now is going to be something like -5 is equal to -5, and then I use the bracket which is x minus 2 whole square. Now, you guys might be thinking कि हमने like x निकालना है, our main objective is find x. You guys might be thinking, सर ये -5 को यहाँ ले जाएं +5 हो जाएगा. No, that's wrong. You cannot do that. असल में, if you look really closely, this -5 is actually being multiplied with this bracket. It's not being added or subtracted. These are two things which are multiplying. And when you move one of these guys to the left side, they need to divide because the opposite of multiplication is division. So all you guys need to do is move this guy to the other side. So it moves actually in the denominator. This is the biggest mistake, well, the most common mistake that I've made students make because I've done this question in the other sections also, and both of them made this mistake. So I assume that you guys would have also made it. I think now things are becoming more clear. We know that anything divided by the same thing, like -5 divided by -5, it's just going to be 1. Okay. So my answer over here is going to be 1 is equal to x minus 2 whole square. Now, I think you guys can guess that all we need to do is take the square root on both sides. So I'm just going to write my working over here as taking the square root on both sides. Once that's done, all you guys need to worry about is the square root of 1 is a plus minus 1. This is another very, very common mistake that students make. They just write a 1. We cannot do that, okay? And the square on this bracket is going to vanish. So we just have x minus 2. Now it's time that you make two branches, okay? One with a plus 1 and one with a minus 1. So plus 1 is equal to x minus 2. You move the minus 2 to the other side, it becomes 1 plus 2 equals x. And x is going to be equal to 3. One answer. The second answer would be as follows. Minus 1 is equal to x minus 2. You move the minus 2 to the other side, minus 1 plus 2
is equal to x. And then x is going to be equal to a 1. So this is your complete answer to this question. And we have sort of covered our second concept of quadratic functions or quadratic equations, which was पहला तो ये था, if you have x with a square on top of it, what do? You take the square root on both sides. Still, you have a square bracket and a number on the other side. What do you do then? Well, in order to free the x from this square bracket and find it eventually, you need to take the square root on both sides. But when do you do that exactly? When you just have a square bracket on one side and everything else, meaning the number on the other side. Only then you are allowed to do so. So I got that. So this is once again a revision of MYP4. So with this done, we move on to our last type of question in the basics of function, which is a table question. So we've done question 1, we've done question 4, we've done question 5 of this worksheet. Now let's try to do question number 2 of this. Okay, I'll zoom out a bit so you can see it, and I'll also copy paste this question over here in the notes. So let us just try to have this question over here in a bit zoomed out manner so that I can see it clearly. Okay, this is my question now. Yeah, I can see it. So a function is given by, let's just move this guy over here. I need to create some space. So this is the only way I can create space. A function is actually given by f of x is equal to 3x plus 3. Complete the table below. So how do you read this table? That's the main science of this question. If you give an input of 2 in your function above, you get an answer of 9. Check kar lete hain. When I place an input of 2 over here, 3 times 2 is 6 plus 3, that is a 9. So agar aapko table fill karna aa gaya hai, you would know how to solve it. Now, you can give 3 as an input to your function and just try it. So in order to label everything over here, I'll just use the symbol 1 over here. Yani part number 1 is this, part number 2 is this, okay? Part number 3 is this, and part number 4 is this, okay? Because I cannot really show the working in these boxes also and write the answer. That's going to be too much. So I'm just going to split everything up, right? So f of 3 का मतलब क्या है? Just place an input of 3 in your equation, which simply means 3 multiplied by 3 plus 3, right? And this simply means 9 plus 3. And this simply means 12. You guys might be thinking, sir, time ज़ाया कर रहे हैं आप, आगे चलें. Well, I need to do this क्योंकि एग्जाम में टेबल वाले सवाल आए हुए हैं. And we cannot really skip this. आगे चलो. Number 2. Number 2 is basically you give an input of minus 3 into your equation. Well, that's not hard. हमने plug and play ही करना है, and I can do that. I'm really good at that. 3 multiplied by minus 3 plus 3, right? And this is going to be, students made this mistake yesterday in the other sections. This is minus 9 plus 3. And this is going to be a minus 6. Done? Okay. So far, so good. We now move on to part number 3. Let's solve part number 3 over here because I don't really want to use a lot of space. Part number 3 is actually the opposite, right? He has given me the output and he wants me to find the input. यानी वो क्या output है which gives me, वो क्या input है which gave me an answer of 3, right? An answer of 3. यानी 3 is equal to 3x plus 3. वो क्या इनपुट है जिसने मुझे आंसर दिया 3 का? वेल 3 माइनस 3 करो, दैट बिकम्स अ 0. सो मैं पूरी वर्किंग शो कर देता हूँ. 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x. 0 इज इक्वल टू 3x. एंड वी ऑल नो जब मैं 3 को यहाँ डिवाइड करूंगा
x is gonna be equal to 0। वो 0 ही वो इनपुट है जिसने मुझे 3 का आंसर दिया। और आप ये देख भी सकते हो। Let's go up and see. When I place a 0 over here, this 3x goes away. All I'm left with is an answer of 3. So everything makes sense. कोई भी चीज ऐसे तुक्के पे नहीं चल रही। And part number 4 is practically the simplest. Give an input of a into your function. Well, the answer is simply going to be 3a plus 3. This is the location where I insert my input, right? So this is my answer. And that's it. This guy is my answer, right? So I hope you guys know कि जब टेबल वाला सवाल आए, जिस बंदे ने टेबल पढ़ना सीख लिया वो आगे काम कर लेगा। नाउ लेट मी गिव यू अ बोनस क्वेश्चन जिस तरह का एग्जाम में आया था। द अदर सेक्शंस हैव नॉट रियली डन इट। ओके, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग्स उनके साथ भी शेयर कर दूंगा बिकॉज सम ऑफ देम वुड माइट नीड हेल्प इन दिस। सो मैं बोनस आपको एक सवाल देता हूँ। You have the same function, okay? The same function as above, the same question as above, same function as above, and same table as above as well, okay? Let me ask you a different type of a question. And this is a past paper question actually. मैं इसे bonus नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा past paper. Don't really have time. Let's ask. Solve the following. Solve 3 multiply by, well, I should not really write the number multiply by, जो कि जिस तरह एग्जाम में आया था वैसे ही लिखता हूँ। 3 multiply by f of 2 कर देते हैं। f of 2 minus 4, इसको सॉल्व करो। नाउ ऑनेस्टली व्हेन पीपल सॉ दिस पास्ट पेपर क्वेश्चन, उन्होंने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 6 है, 6f माइनस 4 आंसर दे दी। दे एक्चुअली फॉरगॉट के इसका मतलब क्या है। सो लेट्स ट्राई टू डिसाइफर दिस, ओके? बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑल यू नीड इज सम पेशेंस। 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 इस बंदे से मल्टीप्लाई हो रहा है। मुझे इसका आंसर तो बताओ। When I insert a 2 into my function, मेरा आंसर क्या होता है? I go up to my table, my answer is 9, right? ये एग्जाम में दिया हुआ था, the answer was given. All you need to do is insert a 9 over here. Minus 4. Done. Now what is 3 times 9? 3 times 9 is a 27. Minus 4. और 27 minus 4 क्या होता है? We all know that's a 23. Trick question. लेकिन वो बंदा जिसे नोटेशंस का नहीं पता, वो बंदा जिसे टेबल रीड नहीं करना आता, तो सो दिस गाय कंबाइंड बोथ स्किल्स इन वन क्वेश्चन, वो ये सवाल नहीं कर सकता। सो ऑल आई नीडेड टू अंडरस्टैंड वाज दिस गाय एंड दैट्स इट। बाकी तो प्लस माइनस था। दिस इज अ बोनस क्वेश्चन एंड आई लीव दिस recording with the other sections also. Okay, so now if I look at my participants over here, इतने ज़्यादा लोग हैं that I cannot really handle them. Uh, Now we come to the aspect जिस aspect पे मैं आपको एग्जाम में सवाल दूंगा, right? And that aspect is actually intersection of functions. So let me just go to that page in the file and let's see कि क्या दिया हुआ है like file में and how do I read it out. मैं थोड़ी सी एक story भी आपको बताऊंगा and then we are going to move forward, right? Where functions meet, यानी point of intersection, right? So ये notes के सारी details हैं, but I would actually want to copy paste them into the file also, because ये वो file है, sorry, ये वो diagram है जो मैंने use करनी है when I explain this concept to you guys. जरा यहाँ add page भी कर दूँ, I need another page. Okay, so let's paste it, right?
थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं सो दैट वी कैन सी इट। टाइम कम है, 40 में मीटिंग खत्म हो जाएगी, जस्ट हैव 10 मिनट्स। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वंस अगेन आपको एग्जाम में इस पे सवाल आएगा, सो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज गोना बी वेयर फंक्शंस मीट, आपकी बुक के मुताबिक या आपके नोट्स के मुताबिक, लेकिन इट्स एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शंस यानी दो लाइंस यानी दो ग्राफ्स जब एक दूसरे को कट करेंगे, हाउ डू आई फाइंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, हाउ डू आई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर दे कट ईच अदर। नाउ देयर आर मेनी केसेस टू दिस, पहले मैं आपको केसेस बता दूं फिर मैं आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। इट इज पॉसिबल दैट द टू फंक्शंस दैट यू आर कंसिडरिंग, वन ऑफ देम इज अ कर्व एंड वन ऑफ देम इज अ लाइन, राइट? तो हम ये सिचुएशन पहले चेक कर लेते हैं। व्हाट इफ वन ऑफ द ग्राफ्स दैट आई हैव इज अ कर्व एंड वन इज अ लाइन? ऐसे भी हो सकता है दे डोंट कट ईच अदर, देयर आर नो सॉल्यूशंस, देयर आर नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? ऐसे भी हो सकता है कि यू ओनली हैव वन सॉल्यूशन यानी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ऐसे भी हो सकता है व्हेन यू हैव टू सॉल्यूशंस यानी यू हैव टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आई विल बी गिविंग यू दिस सिचुएशन इन द डिसम्बर एग्जाम। ओके, डन। देर आर, तो ये सारा मैंने यहां लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। देर आर ऑल्सो सिचुएशंस वेयर द टू फंक्शंस दैट आर गिवन टू यू आर लाइंस, और आपको पता होना चाहिए कि व्हेन आई हैव लाइंस, ये मैं बल्कि वहां ड्रॉ कर दूंगा व्हेन आई एम एक्चुअली टीचिंग यू दिस। व्हेन आई हैव लाइंस, सिर्फ लाइंस का लिख देता हूं। व्हेन आई हैव बोथ लाइंस यानी बोथ स्ट्रेट लाइंस, आपको पता होना चाहिए कि ऑब्वियसली आई विल हैव द एक्स एंड वाई एक्सिस। ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ब्लैक में ड्रॉ कर दिए, राइट? अब यहां लेट से एक लाइन मैंने ग्रीन में ऐसे ड्रॉ कर दी, जस्ट लाइक दिस, और एक लाइन मैंने ब्लू में ऐसे ड्रॉ कर दी। सो इंटरसेक्शन, सॉरी ये लाइन मुझे जरा कहीं और ड्रॉ करनी चाहिए, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। सो इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस वाला सीन बहुत इजी होता है। यू कैन हैव वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब होगा? इफ यू हैव पैरेलल लाइंस। सो इफ यू हैव पैरेलल लाइंस व्हिच रन इन द सेम डायरेक्शन, दे विल नेवर मीट। ये पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन है, सॉरी ये पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन होती है। सो पैरेलल लाइंस have no points of intersection, so they do not meet, hence no intersection. Whereas if we don't have parallel lines, if we have just normal lines, if we have non-parallel lines, then obviously they will meet as shown in the diagram. Okay, they will generally have one point of intersection. अब मैं यहाँ point का word use कर रहा हूँ। Point का मतलब x coordinate and y coordinate. When I ask you to find a point, मुझे अपने आंसर में x और y coordinate दोनों चाहिए। Which basically means I want you to get me this x coordinate and this y coordinate. मुझे ये दोनों चाहिए। And this is actually lines के केस में, intersection of lines के केस में, it's simultaneous equations, right? Intersection of straight lines is basically simultaneous equations. So you should know that intersection of lines is basically simultaneous equations. याद करो elimination, substitution, हम उसी की एक आसान वर्जन करेंगे। Simultaneous, I forgot an L, right? Elimination and substitution and all of that, but we won't really do a big recap of it क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नॉलेज आपके दिसंबर एग्जाम में टेस्ट नहीं होगी, बट व्हेन इट गेट्स टेस्टेड इन द पास्ट पेपर सेशन तब हम उसे रिवाइज कर लेंगे, सो नो नीड टू वरी। ओके, अभी मैं उस चीज़ पे इतना टाइम लगाना नहीं चाह रहा जो एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आ रही। वी नीड टू फोकस आवर अटेंशन ओवर हियर। ओके, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सिचुएशन आएगी। नाउ लेट्स टेक सम रोल प्लेइंग। ओके, हम थोड़ी सी करते हैं ड्राइंग। नाउ दिस इज अ ब्लू गाय, द ब्लू गाय
who is walking on the blue curve नीचे, and there is a green guy who is walking on this line ऊपर की तरफ, right? As they are walking, I actually want both of them to stop at this point of intersection. This is their aim. Okay. As they stop over here, I want you to pause for a moment and comment about their location. Location का मतलब मुझे दोनों के x coordinate और दोनों के y coordinate के बारे में बताओ. Right? So, can you guys clearly see both the blue guy and the green guy, they have the same x coordinate, right? At the point of intersection. And both the green guy and the blue guy, they have the same y coordinate at the point of intersection. इसका ये मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर दोनों ग्राफ्स इक्वल हैं, दोनों ग्राफ्स की लोकेशन सेम है, दोनों ग्राफ्स का सेम एक्स कोऑर्डिनेट है, दोनों ग्राफ्स का सेम वाई कोऑर्डिनेट है, ओनली एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? सिमिलरली अगर आप कहो कि सर ये तो आप तुक्के मार रहे हैं, ओके, मैं आपसे कहता हूं कि दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आ जाओ, दिस वन, ओके। अब यहां भी नोट डाउन करो, इफ द ग्रीन गाय एंड द ब्लू गाय आर एक्चुअली अप्रोचिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन by going up over here, and let's say the blue guy is also going up over here, right? When they stop at this black point, I actually want you to clearly see, do both of these people, do both of these graphs have the same x coordinate and the same y coordinate at that point? Yes. So agar point of intersection ke upar I have clearly seen that both of the graphs are actually the same, dono ke same x coordinate hai, dono ke same y coordinate hai, when everything is the same at the point of intersection, why can't I equate both equations? Why can't I put both equations equal to each other? अब ये डिपेंड करता है आपके सवाल में, आपको दोनों इक्वेशंस y इक्वल्स टू समथिंग और y इक्वल्स टू समथिंग इस फॉर्म में दी जा सकती हैं, या f ऑफ x इक्वल्स टू समथिंग पहला फंक्शन पहली इक्वेशन, g ऑफ x इक्वल्स टू समथिंग दूसरी इक्वेशन आपको ऐसे भी दी जा सकती है. ऑल यू नीड टू डू इज इक्वेट, दैट्स इट. कुछ और नहीं करना आपने, इक्वेट बोथ इक्वेशंस. That is how you find the points of intersection. And this is like on the back side of it, this is the substitution method of simultaneous equations. वो मैं आपको बता नहीं रहा, I'm not using this word, but it's actually the substitution method of simultaneous equations, right? तो सबसे पहले मैं आपको आपका पहला सवाल देता हूं, intersection of lines. We start off with a really basic example, okay? इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस का सवाल है मेरे पास, सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस का सवाल है मेरे पास ये, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द नोट्स, मैं क्वेश्चन 7 भी लिखा रहने दूंगा बिकॉज यू नो आई एम यूजिंग द नोट्स, पेज 25, ओके। सो पेज 25 के अंदर हमारे पास ये सवाल आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. नाउ यू आर वेरी वेल अलाउड टू यूज एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जैसे आप पहले करते रहो, बट आई एम टेलिंग यू अ वेरी इजी मेथड ओवर हियर, राइट? और वो इजी मेथड क्या है? You know that point of intersection का मतलब क्या है? Both graphs are equal at that location, right? So I'm just gonna do y equals to y. अगर आपको y equals to y जरा तंग कर है, इसे y1 कह दो, इसे y2 कह दो, so you can call it as y1 equals to y2. अगर आपको ये तंग करता है वैसे, okay? So can I now write 5x minus 1 equals to 2x plus 5? I know I'm running out of time. ड्रामेबाज. Okay, right? अब 2x को यहाँ move करो. Move all the x's on one side and move all the numbers on the other side, okay? So I'm gonna do 5x minus 2x is equal to 5 plus 1. And this is gonna be 3x is equal to 6, whereas x is just gonna be equal to 2. Now, do you stop here? क्या यहां आपने काम करके अपना सवाल छोड़ दिया? दोबारा याद करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मींस कि ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, वाई कोऑर्डिनेट निकालो. अब साइमल्टेनियस इक्वेशन जब आप सॉल्व करते थे, व्हेन यू वुड हैव फाउंड वन आंसर, आप क्या करते थे? यू सब्स्टिट्यूटेड दैट आंसर इन एनी वन ऑफ द इक्वेशंस. व्हाई? बिकॉज बोथ इक्वेशंस आर इक्वल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. चाहे मैं यहां एक्स की वैल्यू डालूं, चाहे मैं यहां एक्स की वैल्यू डालूं, इट मींस द सेम थिंग.
इसका मतलब ये है when the x coordinate is a 2 what's the y coordinate, when the x coordinate is a 2 what's the y coordinate, and both equations need to give me the same answer because दोनों का y coordinate same है. So put x equals to 2 in any equation. Okay, in any equation. So मैं let's say y1 choose कर लेता हूँ. Okay, y is equal to 5x minus 1. I guarantee you आप बेशक y2 भी choose कर लो, आपका same answer आएगा. Y is equal to 5 into 2 minus 1. Y is equal to 5 into 2 is 10 and minus 1 is 9. Okay, just to prove my point that math does not contradict itself, मैं आपको दूसरी इक्वेशन में प्लग इन करके दिखा सकता हूं, but I'm not going to do it, टाइम बहुत कम है. So my answer is 2,9. जिस बंदे ने एग्जाम में आंसर इस तरह कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ना लिखा, उसका एक नंबर मैं काट लूंगा, अभी से बता रहा हूं. ओके, बट जैसा कि आपको पता है एग्जाम में लाइंस वाला सवाल तो नहीं आएगा, एग्जाम में मैं एक कर्व और एक लाइन वाला सवाल दूंगा. सो वी मूव आवर अटेंशन टू दिस क्वेश्चन ओवर हियर व्हिच इज सॉल्व. ओके, नाउ ऑब्वियसली इवन इफ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ये मैं आपको खुद सॉल्व करके दूंगा. एंड आई वुड लाइक यू टू पॉन्डर अपॉन दिस. हमारे पास 3 मिनट हैं. So I would actually want to be quick on this. Okay, just have 3 minutes. So यहाँ हमारे पास एक कर्व है और एक लाइन है. ओके, एक क्वाड्रेटिक कर्व है और एक लाइन है. एंड वंस अगेन y और y यूज हुआ है. सो आई वुड रियली वांट टू यूज y1 एंड y2 ओवर हियर, राइट? So once again points of intersection की बात हो रही है. So my answer is gonna be y1 equals to y2. Done. y1 क्या है मेरे पास? It's x square minus x plus 3 equals 2x plus 7. Okay. Once again, सारे एक्सेस को यहाँ ले आओ. आई वुड से नंबर्स को भी यहाँ ले आओ बिकॉज आई नो आई विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब मेरी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है, आई नीड टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑन दिस. ओह, आई हैव सम एक्स्ट्रा टाइम. नाइस. इसे हम कंप्लीट करते हैं. ओके, सो मूव द 2x ऑन द अदर साइड. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x. 3 को भी यहाँ लाओ, सॉरी 3 यहाँ है, 7 को भी यहाँ ले आओ. प्लस 3 माइनस 7 is equal to 0. याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में एवरीथिंग इज ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड पे 0 होता है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर चेक पॉइंट. ओके, इसे चेक पॉइंट कहो. एग्जाम में जब मैं आपको इस किस्म का सवाल दूंगा, इस चेक पॉइंट पे आने के 3 अलग नंबर होंगे. दिस इज योर चेक पॉइंट. Why do I call this as a checkpoint? You've achieved a quadratic equation in the standard form. और अब आपने मिड टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसे करना है सॉल्व. अगर आपकी इक्वेशन ही गलत है, आपके दोनों x के आंसर गलत निकलेंगे. You'll plug those answers in any of these equations. y के आंसर भी गलत होंगे. That is why this is a very important checkpoint. And that is why यहाँ पहुंचने के 3 नंबर आपके एग्जाम में अलग होंगे. और इन्हें फिर सॉल्व करने के और 2x के आंसर निकालने के 3 नंबर अलग होंगे. और उसके बाद 2y के आंसर निकालने के 2 नंबर अलग होंगे. सो इट्स एन 8 मार्क क्वेश्चन. ये मजाक नहीं है, राइट? सो आई एम एट दिस सिचुएशन ओवर हियर. वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोनों मेथड सॉल्व करूं, बट आई स्टार्ट विद डूइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है, सॉरी मुझे ए बी सी पहले लिख लेने चाहिए. ए इज इक्वल टू 1, b is equal to minus 3, c is equal to minus 4. Okay, I'll use the quadratic formula first because it's like a cheat code. आपने formula, आपको formula booklet में दिया हुआ है. All you need to do is plug in the values in it blindly, mindlessly, and you would be there. जबकि मिड टर्म ब्रेकिंग में आपको सारा मेथड ऊपर नीचे शो करना पड़ेगा. सो लेट मी राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर यू गाइस दोज हु डोंट नो इट. वैसे फॉर्मूला बुकलेट से आप देख सकते हो. प्लस माइनस टेक अ स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2. मैं मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकता हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है, सो आई एम नॉट गोना डू इट. आप लोग खुद ट्राई कर लेना उसे. सो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज रियली क्विकली. a1 है, b माइनस 3 है, c माइनस 4 है. ओके, राइट. a1 है, b माइनस 3 है, c माइनस 4 है. b is minus 3. Minus minus 3. The minus is separate. Plus minus
बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, वैसे तो 9 होगा, द माइनस साइन डजंट रियली मैटर। -4 A1 है और C -4 है, राइट, डिवाइडेड बाय 2A। नाउ एग्जाम में ये स्टेप शो करने के बाद आपने बस सेकेंड लास्ट स्टेप पे पहुंच जाना है। मैं जरा जरूरत से ज्यादा वर्किंग नहीं शो करूंगा इस दफा, वैसे मैं हमेशा करता हूं, अब नहीं, बिकॉज वी एक्चुअली डोंट हैव टाइम। 3 मिनट्स के अंदर मीटिंग खत्म हो रही है। You should know that 3 -3 square is a 9, and this -4, this is going to be a +16. +16 कैसे आया है? 4 into 1 into 4, 16. How many minus signs do you see? Two of them. So answer plus होगा. Okay? इस तरह हम करते हैं. Divided by 2a. अब मैं दोबारा स्टेप मिस करूंगा। 9 + 16 क्या होता है? 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। सो मैं डायरेक्टली +-5 इसे लिखूंगा। आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम। आप भी एग्जाम में ऐसे कर सकते हो। डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ वर्किंग स्टेप्स। जब इसके नंबर ही इतने नहीं है तो मैं क्यों इतनी ज्यादा वर्किंग शो करूं? डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ आई नीड टू मेक 2 ब्रांचेस। ऑब्वियसली प्लस माइनस है। अब इतनी भी वर्किंग मुझे शो करने की जरूरत नहीं, मुझे इसे डायरेक्टली बस लिखना चाहिए, बट आई नीड टू डू दैट। x is equal to 9 plus 5 divided by 2. That's number one. x, ओहो, ये 9 कहाँ से हुआ? ये तो 3 होना चाहिए। हाँ, माइनस माइनस 3 है। सॉरी, माइनस माइनस 3 है। ये 9 कब से बना? शुड बी a 3। वही कह रहा है, ये 9, it doesn't really feel right. So that gut feeling got me there. क्योंकि आप लोग तो सारे सोए हुए, as expected. And this is gonna be, oh, 2 minutes are left. 3 minus 5 divided by 2. यहां मेरा आंसर आएगा x equals to 4, 8/2, that's 4. और यहां मेरा आंसर आएगा -2/2, which is a -1. Okay, now I have two answers. I have two x coordinates. Mind it, two x coordinates, right? मैंने अब इनके y coordinates निकालने हैं. So substitute these values in any one equation. अब आप मुझे बताओ, would you want to substitute them in the मुश्किल वाला looking equation या easy looking equation? I would actually want to substitute them in y2, ताकि मैं तकरीबन मेंटली अपने आंसर्स निकालूं. So y2 is 2x plus 7. इन सब आंसर्स को आपने प्लग इन करना है. सो सब्स्टिट्यूट दीज आंसर्स इनटू, ओहो, into y is equal to 2x plus 7. When I do that over here, y is equal to 2x plus 7. Y is equal to 8 plus 7 क्या होता है? 15. So that is my पहला आंसर. ओके, यहां जब मैंने किया ये, नीड टू गो डाउन, आई नीड टू क्रिएट स्पेस फॉर माई सेल्फ. यहां जब मैंने किया ये, तो ये होगा y इज इक्वल टू 2 times -1 plus 7, जो कि -2 plus 7 होगा, which is a 5. So now what are my final answers? My final answers are, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा हुआ 4,15, ऐसे लिखना है आंसर. ओके, और दूसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट्स अ -1,5. ये आपका 7 to 8 मार्क क्वेश्चन आपके फाइनल, सॉरी, दिसंबर एग्जाम में आएगा. फाइनल आंसर्स, दिस गाय एंड दिस गाय, बूम. ये आपकी सारी वर्किंग है. आई शेयर दिस फाइल विद यू ऑन LMS along with the recording.